तो उन्होंने कहा जी हाँ देर हो गई वगैरह वगैरह, हमने साल दे दें, आपने साल दे दिया। फिर आपका कहना ये कि आपने जो इलेक्शन कराए सही नहीं है, ये बुनियादी सी बात है। अगर वो इलेक्शन सही है तो मेरे हिसाब से मे बी सब्जेक्ट टू करेक्शन, बाकी रिलीफ विल ऑटोमेटिकली फॉलो। फिर सर्टिफिकेशन आप लाजिम है आप पे, इनका इंतखाबी निशान देना लाजिम है आप पे, वो तो मेरे ख्याल में ऐसी चलेंगी। और अगर ये नहीं दिखा सके कि इलेक्शन उन्होंने सही तौर पे किया है तो शायद इनको फिर कॉन्सिक्वेंस सफ़र करेंगे। अब दो तीन कानूनी बातें भी खड़ी हो गई हैं। एक बुनियादी कानूनी बात है, खान साहब आप ये नोट कर लें, एक बुनियादी कानूनी बात है कि डिक्लेरेशन इन्होंने नहीं मांगा कि भाई जो हमने इलेक्शन कराया है बिल्कुल सही है, वो उन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ पे चले गए। कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ को उर्दू में क्या फरमाएंगे? नताइज और अमामिल। ठीक है, तो वो ज़्यादा फोकस उधर चला गया है, वो बेसिक बात ख़त्म हो गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो जो अभी हमने, अच्छा एक बात हम वजाहत कर लें, अभी मालूम किया था कि जो ये 2 पिटिशंस थी, ये अभी मज़ीद मालूम हुआ है कि वो आज लगी थी और आज उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तारीख ली है दोनों में, ये आज की पोजीशन है। तो जब एक मसला वहाँ खड़ा हुआ है तो वही मसला पिशार जा सकता है या नहीं जा सकता है। माय लॉर्ड, और तीसरी बात जो आई है वो इसको नज़रअंदाज कर दें कि अगर ये पिटिशन ना भी थी, पिशार हाई कोर्ट के पास टेरिटोरियल या कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन था, इस पे आपने हमें कोई बात नहीं मदद की। सर मैं वेरी क्विकली माय लॉर्ड, समीर का कहना है क्योंकि हमने इलेक्शन इधर करा है इसलिए पिशार हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। ये इसको सेक्शन 20 सीपीसी जो है ना, द कॉज ऑफ एक्शन पार्टली और होली अराइज, basically that has been interpreted in so many judgments of the Supreme Court with regard to Article 199 and territorial jurisdiction. तो उस पे भी आप अपना, क्योंकि वो आपने रेस किया है तो सर the direct judgment on the point and observation of this honorable court is in the case of Lieutenant General Salahuddin Tirmizi versus Election Commission of Pakistan, where first the is it in the books? My lord, it's there, it's tab 6 in volume 1, and the relevant observation is at page 760. PLD 2008 Supreme Court 735, page 760. I have highlighted the portion, my lord, but I'll read it. 760. Was there some previous cases also? Yes. In the present case, Election Commission, while discharging functions in connection with the affairs of Federation within the territorial jurisdiction of Islamabad High Court, passed an order in respect of NA20 Mansehra, a constituency of province of NWFP. Therefore, the objection relating to the jurisdiction and maintainability of writ petition before the Islamabad High Court would be of no significance. It may be pointed out that in the light of principle laid down by this court regarding the exercise of such jurisdiction in such situations, the order passed by the ECP, which functions at Islamabad in respect of the constituency of province of NWFP, would be challengeable both before Islamabad High Court and Peshawar High Court. This concurrent jurisdiction is, however, subject to the rule of propriety, according to which a High Court having jurisdiction in a matter, if it has exercised such jurisdiction, the other High Court which has also jurisdiction in the matter may restrain from exercising its jurisdiction. In view thereof, in the present case, propriety demanded that subsequent order passed by Election Commission of Pakistan should have been challenged before the Islamabad High Court, and the jurisdiction of Peshawar High Court should not have been invoked. Ji sir, they are all there. This I point out because this is directly an Election Commission case where it was first challenged. The first order was challenged in Islamabad. The second order was challenged in Peshawar High Court. The Supreme Court they have also said that the concurrent jurisdiction for the both courts. They've said there is concurrent jurisdiction with both courts, but propriety is that if you have gone to a court once in the case of the first order, then for the second order you should also go to that court. In concurrent jurisdiction, because the order was passed for the constitution
constituency of KPK, therefore held that the concurrent jurisdiction. Yes, my lord. But what do you say in this case where the order has been passed at Islamabad and the elections and But this order is for the whole of Pakistan. This order is for the whole of Pakistan. It can be challenged. Now, देखिए उनके elections. Suppose you found that the elections of a political party, to the extent of the federal offices of Punjab, Baluchistan were all right, but only the Khyber Pakhtunkhwa, these persons who came said कि जी हमारे यहाँ सही नहीं हुआ. So that would of course give maybe Peshawar High Court. You are not saying that because the Election Commission of Pakistan is based in Islamabad, the primary jurisdiction is Islamabad. That's you're not saying. No, I am not saying that. What I am saying is that when I passed the first order invalidating their election. Where did you pass that order? 23rd, 11th. Where? My lord, that order was passed in Islamabad. No, both orders were passed in Islamabad. Both orders were passed in Islamabad. First time round, when the order is passed on 23rd of November, they go and they challenge it before the Lahore High Court. Second time, those elections were held in Lahore? No. नहीं वो जो PTI के इलेक्शन जो 2022 वाले थे वो कहाँ हुए थे? जो अंडू हो गए बाद में. According to ECP's instructions, they were in Islamabad. First election. Yes, according to ECP. My lord, the second time round, when the election commission. देखिए अब हमारा एक और भी ऑर्डर पास हुआ है ना, लाहौर हाई कोर्ट ने पास किया, वो पूरा पाकिस्तान में इलेक्शन रुकवा दिए. अपनी टेरिटरी तक तो आप ऑर्डर करें, मगर पूरे पाकिस्तान में आई डोंट नो उसकी कोई रेलेवेंस होगी या नहीं. वो मैटर पेंडिंग है अभी या नहीं पेंडिंग है? My lord, that matter is pending. That is your lordship's order in. बहुत जल्दी में लिखा गया on I think the day I was leaving. 16th of December को लिखा है ना? 15 दिसंबर का ऑर्डर है. I was leaving on 16th early morning. It's in CPL civil petition number 4365 of 2023. उसकी रेलेवेंस कोई है इसके? My lord, the relevance is from the point of view to show to your lordship in terms of the preliminary objection, but may I come to that in a minute as I come to that preliminary objection. On this issue of propriety, this honorable court has said if you have challenged the order of an constitutional body in one high court, then when that constitutional body understood that point. passes the second order, go to the same high court. My lord, the second submission is that order will in RAM or in personam? My lord, that order, according to your lordship's jurisprudence, is an order in personam. But if your lordship takes a look at then this of Mr. Justice Jawad Hassan's judgment in the Lahore High Court, where he says this petition is not maintainable unless you challenge the provisions of 215 paragraph 5. Now, my lord, if that is done, if the vires of a petition is challenged, then a notice to the Attorney General. There is very common phenomenon of this aspect of the case. Sometimes one levy imposed by FBR that is declared illegal by Sindh High Court, but the said levy is affirmed by the Lahore High Court. Even in the case of Semini, yes, there is a distinction of the judgments. One High Court has declared it ultra vires, and while the Sindh High Court has declared it intra vires. So in both situations, the judgments are pending and appeals are pending in this court to reconcile. Yes. So this is also an aspect of the case. That what is to be done if the one High Court declares this and second High Court declares this? My lord, there is a law, is a federal piece of legislation. I point out. If I may just think aloud, those importers, they may be importers in Lahore, they may be importers in Karachi. So they have to show some nexus. I mean, if the importer is based in Lahore and the port of entry is Karachi, I don't think Baluchistan High Court will have jurisdiction. Right, ma'am. Yes, ma'am. So probably you have to show some nexus with that territory. Why yes, are you going to this and not going, and you're not shopping for, what is the word? Forum shopping. Forum shopping. So maybe there is this thing, but I don't think we need to go into that detail. Also, I want to make it clear that we will not consider, because nobody's raised this point, the vires or otherwise of section 215(5) or any other provision, because that's not under challenge. Yes, ma'am. And Lahore High Court has made observations that this can only be done if they are challenged, but has not given a view on the matter if they are in accordance with the constitution or not. So that is for another day. Yes, ma'am.
Yes, my lord, because if that was the case, I would say in particular. Don't say it. All right. But Say it when that day comes. generally, an issue of No. Let's conclude. not virus. But generally, if there's an issue with regard to the interpretation of the Constitution, even then, under Order 27A. नहीं वो बात तो अब तो बदल गया, अब तो 5 मेंबर बेंच बनना होगी ना. अब तो वो आईनी उस पर अब हो जाएगा ना इंटरप्रिटेशन पे. I'm saying in the High Court, my lord. हाँ वो 27A की वो तो उन्होंने सिर्फ कहा कि अगर मैं ये रिलीफ उस वक्त दे सकता हूँ जब ये चैलेंज हो, और ये चैलेंज नहीं हुआ है तो उसको वो तो ठीक है सर. नोटिस देते कि जब वो चैलेंज होता. But even the Peshawar High Court judgment, ये पॉइंट क्लियर है, वहाँ भी नोटिस नहीं किया आप कहते हैं. no notice to the Attorney General by the Peshawar High Court. What? No notice. The Federation was not a party. दिखाएं जरा ऑर्डर दोबारा. Sir, page 28. Page 28 This is one of your grounds in the petition. in the petition. I must compliment my brother. He's read. I didn't get opportunity to read it. इसमें पहले बताएं parties किधर हैं? Sir, Page the parties are there. on which page? Petition कहाँ है? Sorry. Petition, my lord, is at page 30 to 53. If your lordship may. I want to see the array of Yes, my lord. parties. They are there on page 31. ECP is Page respondent number Election one. Commission of Pakistan. Pakistan, and then they're all, these are the private complainants, my lord, the PTI complainants, and that's it. Pro forma respondents. No, former respondents हो गए. And then your What is lordship will the see, point? they go all What the is the way, point involved? they go all the way to 15. नहीं तो you are on notice. My lord, Election Commission is a party. Election Commission is a party. My submission is that if a question arises with regard to the interpretation of the Constitution under Order 27A of the CPC, a notice to the Attorney General is mandatory in view of the. No, but if we agree with you, then we can't hear this case. Then it will be a 5-member bench. No, my lord, my submission is this. ये आप सिंपल कह सकते हैं कि नोटिस देना चाहिए थी 27 की, बस बात खत्म. बस यही बात अगर आप मजीद बात करेंगे नहीं, मजीद नहीं कर रहा. वो फिर आ जाएगा सेक्शन 4 है या क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का. Yes, sir, then it will 5 require. member bench, चलिए. not less than 5 members. चले वो आप काबिल वकील आपके नहीं थे उधर. So there, I hope you're not saying that the council representing the Election Commission of Pakistan before the Peshawar High Court was not a Qabil. no, the Election Commission You of don't say this. the Election Commission of Pakistan was very competently represented. I'm just pointing it out. My lord, the other. Sorry, that was just a side note. My lord, Mind us saying so. Ji, other issue khatam. is that a number of respondents were not even served. Respondents number 3, 4, 5, 9 and 11 were not served. Private respondents को सुना या नहीं सुना? The complainants before you. Some were heard, but the following number 3, 4, 5, 9 and 11 were not even served. नहीं, इनके वकील तो थे, देखें 2 and 7 के भी थे, 8 के भी थे, 10 ये के तो भी बहुत थे, 12 के technical भी बात है. थे, जी सर. और 13 के भी थे. अब वो कोई सर्विस अवॉइड कर रहा है, इलेक्शन ही खत्म हो जाए. 3, 4, 5, 9, 11 के नहीं थे, but नहीं that's, वो बात मेरे ख्याल में ज्यादा इलेक्शन मैटर्स में जरा लचक रखना चाहिए. अगर हम सबके सर्विस को जान से अवॉइड करेगा कि इलेक्शन गुजर जाए फिर मैं सर्विस करूंगा. my lord, the last submission relates to the technical objection raised. My lord, when your lordship goes back all the way up to the case of Javed Hashmi, your lordship will see it is reported as PLD 1989 Supreme Court. PLD 1989. 89 Supreme Court, page 396. This is just to show your lordship the title of the parties. ये आपकी बुकलेट में नहीं है ना? Sir, ये बुकलेट booklet में नहीं है, sir. जी इसमें क्या Because this was a preliminary objection raised. Now your lordship may just look at the title of the parties. This is a 5-member bench. Election Commission of Pakistan was the petitioner. आप कह रहे हैं कि ये ग्राउंड नहीं ले सकते हैं. That is the submission, my lord. How do you distinguish those two cases My lord, that learned senior counsel has cited? my lord, in neither of those cases relate to the Election Commission. To start with, I would also seek your lordship's leave to place on record a list of 35 cases where your lordships are dealing with appeals filed by Election Commission. And your lordship may already also consider one point. Please give a list to Mr. Khan Saab. Khan Saab को भी दीजिए.
जी And your पेंडिंग तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, नहीं सर, फिर भी आ सकता है। disposed of की list. And your lordship may also see your lordship's judgment on 22nd. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डिसाइडेड। जी सर, 2nd of January. Disposed of, I don't know what it means, it could be dismissed for non-prosecution। सर ये डिसाइडेड थे, ये अभी जो मोस्ट रीसेंट है ये 2 जनवरी 2024 का है, by this very bench. ये देखिए बुनियादी सी बात है, I don't know, if you can be sued, so can you sue? I mean, ये तो बड़ा अजीब सा होगा ना, you can be sued, suffer the consequences, and you can't even appeal. And the second, I don't know, it's not, the it doesn't second sound fair. the second submission would be, या तो कहेंगे you can't be sued, फिर तो वो उनको मसला खड़ा हो जाएगा, you can't file a writ against ECB. my lord, the reason why I pointed out federation and all that was that when your lordship looked at the array of parties on page 31, the only official party is the election commission. If I cannot sue, then a judgment which will relate to कमीशन जावेद हाशमी के केस में इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का जजमेंट जो रिट पिटीशन में फाइल हुआ। जी सर। रिट पिटीशन में My lord, and it stands to reason, because in this case, if your lordship examines page 31, I am the only official respondent who is there. If I can't challenge it, then there can be no challenge, and the Peshawar High Court judgment will have finality, and your lordships will have no power under 185. Now, we could probably carve out an exception, which I don't think would be applicable, would be if an allegation of a personal nature is made against a particular member or members of the Election Commission of Pakistan, that you as Election Commission cannot challenge it, that particular member, suppose the writ of quo warranto, but you can't hold office. So naturally it doesn't affect the Election Commission of Pakistan, and that member may challenge it, but not the Election Commission. But I mean, I don't know, does it not stand to reason if you can be sued, so Yes, can you ma'am. sue? That is our submission. That is our submission, and the And the two-sided judgments were dealing with statutory bodies, yes, so I don't know how persuasive they are. This is- Anyways, we keep our mind open. this is an electoral body which makes all these decisions in Got this. it. Anything else? That's all. चलिए आइए खान साहब, आप कल शुरू करना पसंद फरमाएंगे? आप कल शुरू करना पसंद फरमाएंगे या आज? आपकी मर्जी है. Fresh? You look tired. We are also tired. Your Lordship was very kind to offer that it can be on Saturday morning as well. So हाँ, अगर खत्म नहीं हुआ हम चलाएंगे. देखें, हमारे आपको बार-बार हम ये कह रहे हैं इस अदालत से इलेक्शन हम करवाएं ना चाहते हैं. आप कल सब भी लोग कह रहे हैं। भी ज्वाइन कर ले ना, कि इलेक्शन होना चाहिए, बस जी हो. नहीं, बिल्कुल बात तो वहीं पर है. हम साहब कल का आपका क्या है? कल कितने बजे रखें? कल जी जैसे जनाब नहीं, आपकी मर्जी है. देखिए असूलन कल के हफ्ता है ना, हफ्ते को कोर्ट बैठती नहीं, मगर हम आपकी खातिर बैठे, जो टाइम आप कहेंगे हम बैठेंगे. इसे जो टाइम नहीं, आप बताएंगे. in the morning hours बताएं. आप जल्दी नहीं, आप बताएंगे. आप इतनी कम कदर करते हैं सीनियर बुकला की कि उनसे टाइम पूछ लें. अगर आप 6 बजे कहेंगे तो शायद हम कहेंगे इस तरह से आगे बढ़ा दें. let it be 9:30 then as usual. आप ठीक है, कुछ आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस. You want to make it 10? Actually, some instruction that ये 10 बजे करना है. we will also put in some thing in writing, because particularly the questions that have been raised, which I'd like to Would you want? Have you आप कल been provided with these writing books? में लेके Have आएंगे you been बना के? provided with these books? हमें मिल गई हैं आपको? जी जो इन्होंने पेश कुछ ये केस लॉ की बुक्स हैं. दे दीजिएगा मखदूम साहब इनको एक सेट. आप कल बना के लाएंगे, कल ही लेके आएंगे जो भी पेपर्स आपने बना तो चलिए 10 बजे रख लेते हैं. हो सकता है फोटो कॉपी वगैरह में टाइम लग जाता है, तो 10 बजे वो आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग भी हम ले सकते हैं, मगर आगाज तो कर लेना जरा, इस बात को खत्म कर लें वन वे और द अदर. ठीक है सर. वी आर इन योर हैंड्स.
Whatever you want, we will accommodate you to the extent of time. Very kind of your Lordship. Very kind. My lord, may I? ये ना समझे कि हम आपका इलेक्शन आपको सुनेंगे नहीं, और आपको भी सुनेंगे जी, मगर आपके कोई अच्छा हाँ एक बात है, तो मजीद पॉइंट्स हैं उनके अलावा? जी मैं सिर्फ इजाफी गुजारिश करूंगा, मैं रिपीट आज नहीं कर सकते हैं, दो चार सकता हूं, अगर आप 2-4 मिनट में आप कर दें, फिर इनको फ्रेश स्टार्ट मिल जाए। मैं बिल्कुल इजाजत देता जल्दी जल्दी कर जी बिल्कुल। पहली तो गुजारिश ये करता हूँ कि सर कि आई एम आप कॉन्शियस उनसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ये वजाहत करना चाहता हूँ कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो केस प्रेजेंट किया है जी, आप रेस्पोंडेंट नंबर 10 जी 10 अकबर एस बाबर, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने you जो heard in Peshawar or नो not? जी वी वर नॉट सर्व नोटिस एंड आई कुड नॉट आपको पता नहीं चला अखबार वगैरह में पहुंच जाते? what I learned was that a notice will be issued, but it was not issued then. If I have to go by बगैर public नोटिस क्या notice. पहुंच जाते? मैं आज हमने नोटिस तो नहीं किया है ना जी। खान साहब, देखें हम ये कितने चुस्त हैं, पहुंच गए जी जी तो आप भी थोड़ी चुस्ती दिखा देते। अपनी जातियत तक मैं इधर था नहीं, वरना मैं जरूर पहुंच जाता, क्लाइंट नहीं पहुंचा उसको चले notice खैर, इस पे कुछ ज्यादा वजन नहीं है इस बात में। जी, गुजारिश है आपको देखिए, एक बात होती है, एक चीज रिपोर्ट हो रही है मीडिया में सब में, जी, जी। अगर आप वाकई क्या पहुंच जाते, चले उस बात को छोड़े, आगे जी, बढ़िए। मैं सिर्फ फैक्चुअल गुजारिश चलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मेरा इसमें मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि मैं जो चंद आइन की शिक है, खासतौर पे 17(2) वो पढ़ना चाहता हूँ। शेख तो देखिए सुन लेंगे, आपका जो अपना स्टेटस है ना वो बताइए, स्टिल यू आर ए मेंबर और नॉट? जी, I am a member. I was a founding member. I have not been removed from membership. No show cause ever noticed. Never resigned. I have not resigned. I have not joined another party ever. वही रिमूव। ठीक है ना, जी, रिमूव ये फैक्ट है जी। और जिस तरह मैंने गुजारिश की कि इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला भी है। ठीक है जी, वो तो सुन लिया। अब मैं सिर्फ गुजारिश करना सॉरी मालूम, आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, आपको जी मैं पहली तारीख को जो G8 का दफ्तर है, मरकजी दफ्तर, वहां गया, अपने साथ काफी 10-20 लोग लेकर गया, नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए गया, कागजात जमा कराने की जो भी तफासील थी उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए गया। मुझे कोई कागज या नॉमिनेशन पेपर या कोई रिक्वायरमेंट, कोई रूल प्रोसीजर नहीं दिया गया। मगर वो आपके हाथ है, कोई नॉमिनेशन पेपर की शक्ल हमें दिखाइए। मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं दिया गया, बल्कि आपको नहीं दिया गया, मगर वो क्या लगता शक्ल उसकी कैसी है? मैंने जो इलेक्शन कमीशन में प्रोसीडिंग्स हुई उसका रिकॉर्ड जो मेरे पास है उसमें भी मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी जी। अगर नॉमिनेशन का कोई फॉर्मेट था, पेपर था, मैंने नहीं देखा जी। इसमें अगला पॉइंट, और ये मैंने बड़ा वजाहत में जो अपनी मेरी आप कह रहे नॉमिनेशन पेपर डिड नॉट एग्जिस्ट? कुछ नहीं, अगर आप पेज 231 पे मेरी शिकायत का पैराग्राफ नंबर 2 देखेंगे, नॉमिनेशन फॉर्म मिला मेरे इल्म में नहीं है जी। अच्छा आप बताइए। तो पेज 231 में पैराग्राफ 2 में मैंने वाज़े तौर पर लिखा कि ऑन नवंबर 30 प्रेस रिलीज वाज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ PTI को कमेटी स्टेटिंग that all arrangements have been completed for holding the intra-party elections on December 2, 2023. Copy press release attached. The press release also stated the appointment of Mr. Niazi as the PTI Chief Election Commissioner. The press release did not mention any other names of the PTI Federal Election Commission, nor did it share any other details regarding the intra-party election, including election rules and any regulations, detailed schedule of elections, nomination timeline and procedure, criteria for acceptance and rejection। आप लिख रहे हैं जी, ये मैंने जो कंप्लेंट दायर की इलेक्शन कमीशन को उसमें लिख रहा हूँ। इलेक्शन की डेट आपको पता थी जी? वो जो प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि 2 तारीख को। कॉपी आपने भेजी उनको, PTI को? जी उनके पास है, बिकॉज दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, दिस वाज अ कंप्लेंट टू द इलेक्शन कमीशन। प्रेस रिलीज कौन सी कह रहे हैं आप? प्रेस जी रिलीज ये 30 नवंबर को जो प्रेस रिलीज इशू की पार्टी ने कि हम इलेक्शन करने जा रहे हैं। लगी हुई है प्रेस रिलीज? प्रेस रिलीज सर आई विल हैव टू चेक, अगर नहीं हो तो दिखा दीजिएगा। इलेक्शन से पहले इशू हुई थी प्रेस? जी 30 नवंबर को हुई थी। अच्छा, और नेक्स्ट पॉइंट मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 17 जो है उसमें 2 पहलू हैं। एक तो जनरल है जो पार्टी के हवाले से है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, लेकिन जो मुझसे रेलिवेंट है वो 17(2) का मैं कुछ हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ सर। एवरी सिटीजन not being in the service of Pakistan shall have the right to form, ये पहला हिस्सा है जो सब आर्टिकल 1 में भी है, but the second one is more important to me, और be a member of a political party। तो फंडामेंटल राइट है किसी का भी कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर लेना। और आगे है कि सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ। सो गुजारिश ये है कि किसी का भी किसी पार्टी का मेंबर बनना फंडामेंटल राइट है। मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, था, आज भी हूँ। मैंने आज तक
कभी कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, बल्कि मैं यही जद्दोजहद करता रहा कि इस पार्टी की इस्लाह अंदरूनी मामलात की हद तक हर पहलू में होनी चाहिए, और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। जो केस साइट भी हुआ फॉर्म बनने का, वो भी उसका आवश्यक नतीजा था। सो गुजारिश ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। अच्छा, ये जिक्र हुआ था फाउंडिंग मेंबर्स की, आपके पास लिस्ट है? मेरे पास पुराना आइन है जिसपे मेरा नाम है, मैं फराहम कर सकता हूँ। कल ले आइएगा। जी मैं जी। और वो फाउंडिंग मेंबर्स में आप हैं कोई या नहीं है? सर आई हैव टू वो भी देख लीजिएगा। मुझे ये जरूर मालूम है कि मैं कल बता दीजिएगा, अगर या तो आज जवाब दें या फिर कल करना है। सर दूसरा, मैं सेक्शन 218(3) जिसका हवाला दिया गया है, उसको मैं समझता हूँ कि 17(2) के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन है सेक्शन 218 सब सेक्शन 3 जी, आर्टिकल सब आर्टिकल 3 218 तो नहीं जिक्र किया। 218 It shall be the duty of the Election Commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary. अच्छा, आप आइन पढ़ रहे हैं? जी आइन का। हाँ, तो उन्होंने पढ़ा जी वो पढ़ा। हाँ। मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल मेंबर के हवाले से 17(2) को, उस पोर्शन को, मेरी मेंबरशिप को 218(3) के साथ पढ़ना है, और फिर 219(e) के साथ भी पढ़ना है। बट एक और आपके मेंबरशिप का तो सवाल, उन्होंने क्या ऑब्जेक्ट किया है, क्या मेंबर नहीं है? जी, पेशावर हाई कोर्ट में जो पिटीशन है वहां पर उन्होंने ये कहा कि इज नॉट अ मेंबर, और अभी भी शुरू में दिखाइए किस पैराग्राफ में कहा है। Respondents 215 are not members of PTI. Page 36, paragraph 11. Page 36, paragraph 11. जी. That the respondents 2 to 15, I was number 3 in that, are not members of PTI, nor contestants of any intra-party elections that have. ये तो एक जनरल डिनायल है। इन्होंने ये कहा। सो मेंबरशिप के हवाले से जनाब ने पूछा, हम इनको भी ये कह देते हैं कि किस बेसिस पे वो ये बात कर रहे हैं। जी जरूर, वो भी कल जवाब दे देंगे। और आप दिखाइए कि आप उसके, वो क्या उसको कहते हैं, फाउंडिंग मेंबर को क्या कहेंगे? फाउंडिंग मेंबर ही था मैं, वो जो वो उसका सबूत दिखाइएगा। जी मैं अगला पॉइंट, मैं आर्टिकल 222 का हवाला भी देना चाहता हूं सर। आर्टिकल 220 जी आइन के सब एफ में, आर्टिकल 222 एफ जी, आर्टिकल 222 ये कहता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मजलिस शूरा पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर सो मेनी थिंग्स। एफ में कहता है ऑल अदर मैटर्स नेसेसरी फॉर द ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टू हाउसेज, द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स। यहाँ पर रुकना चाहता हूँ कि ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउसेज में अब 2017 का जब कानून आ गया है, और उसमें इंट्रा पार्टी एक एम्फसाइज किया गया है कि एक अहम तरीकाकार है जो अंदरून में पार्टी होना चाहिए। तो ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउसेज नहीं हो सकती अगर पॉलिटिकल पार्टीज इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ सही क़यादत पार्टी में नहीं आएगी, और फिर वो पार्टी ना फैसला करे कि कौन कौन से मुस्तहक लोग हैं जो नुमाइंदगी अवाम की करेंगे। आगे बढ़िए। और इसका जो एक्सेप्शन है सर, बट नो सच लॉ शैल हैव द इफेक्ट ऑफ टेकिंग अवे और अब्रिजिंग एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कमिश्नर और द कमीशन। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि ऑल्दो हमारे पास डिटेल्ड रीजंस नहीं है अभी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट या किसी कोर्ट को भी ये इख्तियार ना होगा कि वो कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन करे जिससे कमीशन के इख्तियारात में कमी आ रही हो, और जो उसकी ड्यूटी टू कंडक्ट अ फेयर इलेक्शन है, और जो 218 का बेंचमार्क है। पेशावर हाई कोर्ट क्या नंबर था? WP 6। वो मालूमात कर लें जरा रजिस्ट्रार से कि वो ऑर्डर आ गया है, और ऑर्डर आ गया तो वो मंगवा लीजिए, और नहीं आया तो कब तक आ रहे हैं ये भी पूछ लीजिएगा। जी तो ये वो इजाफी आईनी शिक है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। आगे बढ़िए। अब मैं सर इलेक्शन एक्ट पे आना चाहता हूँ। जी आ जाए। इंडिविजुअल कंप्लेनेंट के हवाले से सेक्शन 15 एक नई शिक है जिसमें कंप्लेंट्स की प्रोविजन है। सेक्शन 15 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2000 कंप्लेंट्स। जी कंप्लेंट्स, ये पहले रोपा में नहीं था। ये 15 ये कहता है एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय। हो गई बात, अगली बात। जी इसके बाद सर जो सेक्शंस है, मैं 200 की तरफ आता हूँ।
200 में मैं 200 सब सेक्शन 4 की तरफ निशानदाही करना चाहता हूँ कि notwithstanding anything contained in subsection 1, a political party shall not, और इसका सब ए जो है, propagate any opinion or act in a manner prejudicial to the fundamental principles enshrined in the constitution. So मेरा जो proposition है for consideration of the court वो ये है कि ये fundamental प्रिंसिपल enshrined in the constitution है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और मुस्तकिल पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में बने ताकि जो हाउसेज हैं वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट हो सकें, जो अवाम की प्रॉपर नुमाइंदगी कर सकें जी। इसके अलावा सर जो आई विल summarize my proposition के consequences इंट्रा पार्टी इलेक्शन होल्ड ना करने के 3 हैं जो envisaged हैं इलेक्शन एक्ट में। पहला सेक्शन 2025 में है जिसका एनलिस्टमेंट से ताल्लुक है। किससे? एनलिस्टमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। रजिस्ट्रेशन जी, रजिस्ट्रेशन या एनलिस्टमेंट। व्हाट इज द वर्ड यूज्ड इन द एनलिस्टमेंट? एनलिस्टमेंट, ये मैं गुजारिश करूं, एनलिस्टमेंट जी एनलिस्टमेंट। इसमें यह है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एनलिस्टमेंट के लिए आती है तो सेक्शन 202 ये कहता है कि आपने कुछ डिक्लेरेशंस या कोई सर्टिफिकेशंस देनी है, उसमें भी 209 का जिक्र है। तो अगर एक पार्टी जो 209 किसका आइन का? इलेक्शंस एक्ट जिसमें सर्टिफिकेशन है कि जी हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। कहने की गुजारिश ये है कि अगर कोई पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती ही नहीं है तो वो तो एनलिस्ट होने की भी एलिजिबल नहीं है। इन्होंने कराया, मैं आपको ये कह रहे हैं हमने कराया, अब कोई कंटेस्ट ना करे, हम कोई जबरदस्ती तो नहीं करवाएंगे उसको कंटेस्ट। बिल्कुल सही, मैं सिर्फ ये गुजारिश, इलेक्शन खत्म हो जाता है इस बात पे? जी मैं उस पर आता हूं, लेकिन मैं सिर्फ गुजारिश ये कह रहा हूं कि 3 कॉन्सिक्वेंसेज हैं विज़ावी इंट्रा पार्टी इलेक्शन। एक पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ये कि पार्टी की एनलिस्टमेंट भी नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है जिसका जिक्र हुआ कि अगर सर्टिफिकेट फराहम नहीं किया जाता तो फाइन इंपोज कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 2085 में है। और तीसरा कॉन्सिक्वेंस है इनएलिजिबिलिटी ऑफ अ सिंबल। तीसरा कौन सा सेक्शन है जी? वो सेक्शन है 215, 4 and 5। 215 सब सेक्शन 4 and 5। सो गुजारिश ये कि फोकस जो है पार्टी का वो तीसरे वाली कॉन्सिक्वेंस पे ज्यादा रहा। सिंबल नहीं मिला तो नुकसान आपको भी नहीं होगा? आप भी तो मेंबर है ना पीटीआई के, फाउंडिंग मेंबर है आप, फाउंडिंग मेंबर। I am guilty of following the law and do not worry about the consequences. We are just asking a question. मेरी जात पे नहीं जी, मुझे तो फायदा होगा अगर पार्टी मुस्तहकम आप असूलों पे लड़ना चाहते हैं जी। I am guilty of following the law। अगर उसका कोई नुकसान है तो ठीक है, हम सवाल पूछते जाएंगे, आप जवाब देते जाएंगे। जो फोकस रहा है आर्गुमेंट का जो बज़ाहिर लग रहा है वो थर्ड कॉन्सिक्वेंस पे है। सो फुल पर्सपेक्टिव ये है कि इससे अखज़ ये किया जाता है कि मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, ये सब बातें चली गई हैं सिंबल पे। जी वो तो अगर इलेक्शन सही हो गया तो सब कुछ मिलना चाहिए, वो कॉन्सिक्वेंस है मेरे हिसाब से। अब सुनेंगे खान साहब को कल क्या कहते हैं। बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस बीइंग नियर तो मेरे ख्याल में सिंबल का फोकस है, बट कानून की मंशा ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाजिम है। कानून की बुनियादी मंशा है कि इलेक्शन कराओ जी, साफ शफाफ कराओ, फिर बाद में चीजें मिलती जाएंगी या नहीं मिलेंगी तुम्हें, वो तो एक तरह से सजा या जजा या सजा वाली बात आ गई ना जी। बिल्कुल, अब इट इज नॉट फॉर मी, कंप्लायंस वाली बात अलग है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा शिकवा जाती तौर पर एज ए कंप्लेनेंट ये है कि मुझे मौका नहीं फराहम किया गया जिसकी वाज़ेह निशानदेही 2 सेक्शन 208 सब 2 में भी की गई, जो हवाला दे दिया गया। मैं उसको रिपीट नहीं करता कि हर मेंबर को ये इख्तियार है कि उसको इक्वल प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट इलेक्शन। और कोई बात? सो ये वो अजाफी प्रोविजंस हैं। आप इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? पीटीआई शायद मुझे तंग कर रही है सर, मैं तो अपना हक की खातिर लड़ रहा हूँ। ये तो ये आपकी जो कब से शुरू हो गई है? 2014 नवंबर से जी। उस वक्त क्या हो गया था 2014? उस वक्त पार्टी में फंड्स का मामला था सर। मेरा ख्याल था कि गैर उसमें प्रोहिबिटेड सोर्सेज है, फॉरेन फंडिंग तो एक जर्नलिस्टिक टर्म बन गई, लेकिन कानूनी मंशा ये थी कि प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे नहीं आने चाहिए। और प्रोहिबिटेड सोर्सेज क्या थी? वो ये थी कि मां सवाए इंडिविजुअल सिटीजन्स के और कोई पैसे पार्टी में नहीं दे सकता कानून के मुताबिक। तो मेरा ये कहना था कि
citizens of Pakistan, wherever they may be, can contribute to the political party. But who is not a citizen or somebody who is a corporate body, even a local company for that matter, cannot contribute to the funds. So मेरी तो complaint उस नौयत की थी कि शफाफियत आए. Companies cannot contribute. The law said it could not. Which section? This was section 5 and 3 of the PPO, and this is also now in sections. खैर ये इसमें इशू नहीं है, but it was a specific provision है जी कि चलिए ठीक source क्या point. So मेरा इस मामले में अभी यही गुजारिश है कि जो इलेक्शन था वो बिल्कुल शफाफ तरीके से नहीं हुआ. एक आपको चुपता हुआ सवाल पूछ सकते हैं? आप खुद खड़े हुए हैं या आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है? खुद ही खड़े हैं जी 2014 से. अच्छा, और इसमें आपने सवाल पूछा है तो मैं इजाजत हमारे जहन में जो बात होती मैं तो कह देता हूँ. आपकी इजाजत है तो मैं भी कैन स्पीक फ्रीली. यस. 2014 में जब मैंने कंप्लेंट की थी, उस वक्त जो भी मामलात मुहरकात थे, मेरी काविश जारी रही. I fought single-handedly against the mindset that respectfully prevailed at the Election Commission, the mindset that was reflecting the government of that time and the powers that be. So I have stepped. किसकी हुकूमत थी? जी हुकूमत तो एक है जो हर वक्त रहती है और एक हुकूमत है जो बदलती रहती है. तो मैं तो रेगुलेटरी स्ट्रगल और सियासी स्ट्रगल और प्रिंसिपल स्ट्रगल को परसिस्टेंटली विद सीरियस माइंडनेस परस्यू करता रहा हूँ और अभी भी करता रहूँगा. जो भी आउटकम हो वो तो जनाब के हाथ में. Done? I have nothing further to add. ठीक है, बट आपको डॉक्यूमेंट लिया जी मैं इंशाल्लाह. ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह 10 बजे. खान साहब ठीक है 10 बजे. वो इलेक्शन कमीशन वाले भी ले आए होंगे ना फाइल, आपने बोला था फाइल. वो फाइल आप ले आए इलेक्शन कमीशन की फाइल, ओरिजिनल फाइल, वो हमें जरा छोड़ दीजिएगा. ओरिजिनल फाइल लाए हैं इस मैटर की? नहीं, राइट का क्या मतलब, लाए हैं या नहीं लाए हैं? नहीं, हाँ छोड़िए, नहीं ले जाइए, गुम भी हो सकती है. कल ले आइएगा अगर लाए नहीं है. ठीक है, ताकि अगर कोई चीज देखना चाहे हमें सब तो वो देख लेंगे. तो अगर हाँ ओरिजिनल फाइल जो भी इस मामले की है, वो लाहौर वाली, पेशावर वाली, इलेक्शन वाली, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, ठीक है. 10 o'clock इसमें हाँ ऑर्डर लिख देते हैं आज का शॉर्टर से. हाँ ओके, कल का बेंच भी निकलवाएं, इशू कर दें. हाँ इसमें लिखें this civil petition for leave to appeal assails the order of the assails the order. किधर क्या order का पेज? ऑर्डर किस पेज पे है? हाँ, assails the order dated 10 January 2024 of the Peshawar High Court, Peshawar, whereby it set aside the decision कहेंगे या judgment कहेंगे, the order of the Election Commission of Pakistan within bracket ECP dated 22 December 2023 and full stop, and issued certain directions. The Election Commission, we are informed that the detailed reasons have not as yet been provided, but since the matter is time sensitive and as the elections, general elections are scheduled for 8 February 2024 in Pakistan, this matter requires immediate attention. Full stop. Accordingly, we proceeded to hear the matter. And heard Mr. Makhdoom Ali Khan and heard learned Mr. Makhdoom Ali Khan, senior ASC, full stop. Mr. Learned senior ASC, Mr. Hamid Khan has filed caveat
अच्छा, वो अली जफर साहब हमसे बात करना चाह रहे थे उधर से, उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए कि बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। नहीं होंगे मेरे तो वो बेशक फॉग के बाद पहुंचे, कम से कम आपको सुन लें, तो वो अगर कोई भी एड्रेस करना चाहे तो इन पर्सन आके कर ले। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, खाली सिंपल मीटिंग। अच्छा, इधर कौन अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी चौधरी साहब तो बैठे हुए थे हैं, वो होंगे, वो 27 की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, आप इसमें पार्टी तो नहीं है, मगर अगर कोई सवाल उठ गया तो हम शायद पूछ लें आपसे। हाँ ओके, 27 की जरूरत नहीं है, वैसे डीएजी होता है ना, जाहिर है फेडरेशन और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो जरूरत पड़ी हम आपसे पूछेंगे, मगर अभी मैटर तो लगता नहीं है आपसे कुछ पूछें। बाहर फिर भी आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं अगर कोई आप करना चाहें। आप तो सुबह से बैठे थे, सुन रहे थे ना सब कुछ, ठीक है। तो आपका वीकेंड भी खराब करना चाहते हैं? अच्छा, क्या लिखा है? And states that and has raised preliminary legal objection with regard to the maintainability of the instant petition, and states that he will expand further thereon tomorrow. Full stop. To be treated as partner to come up tomorrow at 10 a.m. The office to inquire from the Peshawar High Court whether the detailed reasons have come, and if not, when are they expected? क्या कहा उन्होंने? ठीक है, ठीक है। Anything else you want to note it? Anybody? चलिए, thank you everyone for spoiling our weekend. बुरा न माने, ऐसा लाइटर नोट। आइए, थैंक यू जी, चलिए।